welcoming you all to yet another interesting session on the eternal magic of Bollywood music with Karan Oberoi, who's supposed to come join us very soon, Satya Saran ji, and we have our own Dipankar Mukherjee in this fifth edition of OCLF organized by SGR Knowledge Foundation in association with GH Raisoni University, powered by Raisoni Group of Institute. Let me introduce you all to this lady, Satya ji. Best known for her 12-year association with Femina. Now, Satya Saran ma'am is also the author of a diverse variety of books. The Dark Side reflects her love of the short story, while the critically acclaimed biography is 10 Years with Gurudutt Abrar Alvi's Journey, Sun Mere Bandhure, the musical world of S.D. Burman, and Baat Niklegi To Fir, the life and music of Jagjit Singh bear testimony to her love for cinema. Satyaji's latest books include a biography of Pandit Hari Prasad Chaurasia and Ritu Nanda. She has been a stage actor with Vinamani Chawla. She has written a TV serial titled Kashmakash on marital problems. Besides, she writes columns in the New Indian Express and Hindu Business Line. The column she wrote in Femina and Me magazine was published over 3 years to gain new fans as a guest column in Dainik Jagran. She is currently translating a critical biography of Gulzar. Next to her, we have our own pride of Nagpur, Dipankar Mukherjee. He is a publisher and director of Readomania Publishing, an independent publishing house based in Delhi. Under his leadership, the house has produced over 120 books in just 6 years. And that's a very good number, if you know anything about publication. With some critically acclaimed and award-winning titles as well. He teaches creative writing at many institutes and runs the popular Young Author program. Anybody who aspires to be an author, he's a person to look for. He's an engineer from Nagpur University, holds an MBA degree from IIT Madras and has been in the corporate world for 9 years before becoming an entrepreneur. He also manages business interests in hospitality and manufacturing. Do you really do we need to introduce Karan Oberoi? You were here, he was here, and you heard him. How charming, how good he is. But one thing to add with this personality, Karan Oberoi, is he's a model, he's a singer, he's an actor, writer, lyricist and music director, producer, creative producer, and writer-director with a lot of his creations to be known and inevitable, right? Many of you must have heard, listened, come across. So he'll be joining soon. And I request Dipankar Mukherjee to please take over and let's set the ball rolling. Thank you, Manish. Thank you so much. Do we have somebody in the audience who can volunteer to sing or rather hymn a few lines? We'll all sing Sare Jahan Se Acha. Hindustan Hamara. Okay, चलिए. चलिए. सारे जहां से अच्छा Come on, second line. ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. Thank you so much. Welcome, Karan, to the session. Your profile was read out in absentia, so. And I was waiting outside. I thought there was another session going on, so I didn't want to interrupt the session. So I was just patiently waiting outside for this session to get over. Fortunately, someone told me that this is your session. So. And the best part is before reading, actually, they were knowing you. How sweet. And Karan, this is music, so she will speak and you will sing. Wonderful. Sounds like music to me. Absolutely great. So we'll start off and jump off into the session directly. Satya, ma'am, question to you. Since you're a veteran, you've seen the industry for so long. How do you think Bollywood music has evolved over time? Bollywood music कैसे change हुआ है? क्या graph रहा है उसका? I think earlier we used to sing when we were happy, when we were sad,
We would listen to songs. I still, when I'm sad, sing some songs which give me hope. Or when I'm happy, I sing songs which make me feel even happier. But now the generation sings Bollywood music to bounce. That's all they do. I don't think they get emotion, they just get rhythm out of it. So in one line, I think that's the history of music. I'm hoping it goes back and meets the circle. Karan, if I had to ask you the same question, Bollywood music कैसे बदला है आपकी नज़रों में? How would it be? I have a slightly different point of view. मुझे ऐसा लगता है कि there's evolution that has happened, which happens across mediums, not just in Bollywood. First of all, let's not just call it Bollywood. Let's call it the Indian entertainment industry, because Bollywood is slightly, it's almost like a Me Too. We're not a derivative branch of Hollywood. We are the Indian entertainment industry. We'll start with that. As far as the soundscape changing, so a lot of songs were written initially, where the poetry was written and then there was music that was built around it. And as we've grown up older, as the music has evolved, the soundscape has changed. So if you remember the early 90s, 90s में एक दशक आया था जब जो अभी भी काफ़ी यंगस्टर्स उसको पॉप फॉलो करते हैं कि एक इंडी पॉप का सीन आया था जहाँ पर लकी अली, सिल्क रूट, मेड इन इंडिया, Band of Boys. और वहाँ एक और नाम था बैंड ऑफ बॉयज. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो वो एक दशक था जहाँ पर एक सिंगर अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता था एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के साथ, और उसी के इर्द गिर्द तो एक सिंगर की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द उसका म्यूजिक बिल्ड होता था. दैट्स व्हाई इट फाउंड उसके अपने ट्राइब्स बनते थे जो आज भी काफ़ी लिस्टिकल्स में आता है. फिर क्या हुआ, वो जो साउंड और जो बॉलीवुड की एक साउंड थी वो ढोला, तबलक, स्ट्रिंग्स उस तरह का और एक सिचुएशन के ऊपर लिखी जाती थी. फिर क्या हुआ, वो जो साउंड्स जब यंगस्टर्स ने लैप अप करना शुरू कर दिया तो वो दोनों उनकी इंटरमिंगलिंग शुरू हो गई. मैं आपको सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ. तो अब जो है पॉप म्यूजिक जो 90s का था वो आज का बॉलीवुड म्यूजिक है. सो लॉट ऑफ रैप, लॉट ऑफ म्यूजिक. सेकेंडली कोई भी म्यूजिक या कोई भी आर्ट फॉर्म होता है ना, वो बेसिकली इट फाइंड्स इट रूट्स इन यू गाइज. आपको पकड़ के ही वो बनाया जाता है. तो अगर आप कोई जैसे अभी मुझे इस बात में काफ़ी बातचीत होती है कि रैप म्यूजिक अच्छा नहीं है. क्यों? रैप इज रिदम एंड पोइट्री, एंड जो गा रहा है वो आपकी कोई एक टच पॉइंट है जिसके बारे में वो गा रहा है. वो किसी के बारे में भी हो सकता है, वो हो सकता है गाड़ी हो सकता है, वो ब्यूटीफुल गर्ल हो सकता है, जो भी है वो उसका साउंड है वो आप तक पहुंच रहा है. तो साउंड वाइज में एक प्रोग्रेशन हुआ कि वो जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक था उसी का साउंड बॉलीवुड में आ गया है. और अब जो म्यूजिक है जो आप जिस पे रेजोनेट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज मेलोडिक गाने नहीं चलते हैं. अरिजीत इज द किंग ऑफ सिंगिंग सोल सॉन्ग्स, जो उसके और मैसिव फॉन फॉलोइंग है ग्लोबली. तो और क्या होता है, हर जनरेशन को ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन बहुत प्योर थी और आगे वाली जनरेशन इतनी प्योर नहीं है. नॉट ट्रू. वी आर अ मिरर टू सोसाइटी एंड वी राइट सॉन्ग्स which people resonate with. So it's just that's what my point of view is. Excellent. Satya ma'am, 50s, 60s is considered to be an era of music aligned to classical, aligned to more traditional forms of instruments. What is your opinion on 50s and 60s in terms of music? I would say not completely aligned to classical. There was a lot of folk element in it. There was a lot of other spiritual music, bhajans and whatnot. Those streams also flowed into the classical. But what was done, I think, was to democratize classical music, bring it down from those exalted heights where only a few could understand it. You had to know what it meant, what the whole vocabulary and grammar of each rag was to understand. वो सब निकाल के simplify our musicians like Anil Biswas and others. They made the ragas easy to sing. You could sing along with the song. If you listen to Roshan or you sing Naushad and you sing Jubara songs, any one of us can sing, not the really classical numbers, but yes, you can sing Tu Ganga Ki Moj Mein Jamuna Ki Dhara, and you can sing the other songs. So I think that was something that was very important, to keep the melody in the music, keep the classical element, but bring it to a level where the common man could appreciate it. That's great, Karan. Which is the earliest song that registered a deep impact on you, and why? And could you sing it for us as well? Sing.
The first song that deeply impacted me was तुमको देखा तो एक ख्याल आया, and I became a big fan of Jagjit sir. I think he was one of the, I mean, he was the voice of God for me. And why is because जो सादगी वाली बात होती है ना, बहुत बड़ी बात बहुत हल्के तरह से कह देना, एक उसमें एक ताकत होती है. तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, पोइट क्या कहना चाह रहा है कि तुमको देखा तो एक ख्याल आया कि ज़िंदगी तो धूप है लेकिन साया तो हो. अब इसमें इट्स सच ए मेटाफोरिकल स्पेस टू टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ लव. और आप देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस समय आया और ख़त्म हो गया. वो गाना लेजेंडरी रहा है, आज भी वो हम सब जानते हैं उसके बारे में. तो आई थिंक दैट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी. इनफैक्ट मैं जब बम्बई पहली बार आया था तो मैं गज़ल सिंगर बनने के लिए आया था. तो मैं बहुत सारे उसमें गया म्यूज़िक कंपनी में. बोला भाई मुझे गाने गाने. तो बोला आपकी शक्ल देखी है तुमने? तो बोला क्यों? बोले आप मॉडल करो. अरे सर मुझे तो गाना गाना है. नहीं आप ऐसा करो, म्यूज़िक वीडियो करो. तो मेरा कैसेट जो है, जो मैंने एक बनाया था स्क्रैच, वो म्यूज़िक कंपनीज ने सुना ही नहीं. बोले इसको नॉट टू टेक हिम सीरियसली. फाइनली आई स्टार्टेड माय म्यूजिकल करियर एज अ म्यूजिक वीडियो मॉडल. सो जब आयरॉनिकली जब बैंड ऑफ बॉयज हैपेंड, द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट हैपेंड टू मी वाज, सबने पूछा कि आप अच्छा दिख रहे थे वीडियो में, गाया किसने था? सो दैट इज माय द सॉन्ग दैट. And would you like to sing that? हाँ, प्रश्न दूसरा जो जुड़ा हुआ था पहले से. आई जस्ट ट्राई. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया. आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की. आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया. तुमको देखा तो ये ख्याल आया. Can I share a story about this song? Please, please. When this film was being made, Saath Saath, it was being made on a very low budget, and there was this deal between the music composer Kuldeep Singh and Jagjit Singh. When they were strugglers, they used to be in Bombay outside Gaylords and eating ice cream at Rustom's, because he used to give them free ice cream. पैसा नहीं था उनके पास. तो एक दूसरे से कहते थे कि कभी मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तो तुमसे गवाऊंगा. And he would say, अगर मैं गाऊंगा किसी फिल्म के लिए तो तुमसे म्यूजिक बनाऊंगा. So when Saath Saath was being made, Jagjit had become a big man, but the director of the film said, I want Jagjit to make the music. तो Kuldeep said, मैं मना लूंगा उनको. And he went to him and he said, याद है वो बात? तो मैं अभी म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला हूँ. तो जगजीत said, हाँ मैं गाऊंगा. बोले पर पैसा? बोले पैसे वैसे का पूछो, चलो मैं गाता हूँ. So he sang the songs, and there is one more story to this, कि इसी टाइम अर्थ बन रही थी and he was making the music. तो Kuldeep said, how do I make music that does not sound as if Jagjit has made the music? And how do I make him sing that people don't think that he has made the music? So the first song he made Jagjit sing was on a different pitch. तो Jagjit said, ये तो मेरा pitch नहीं है. He said, पर भाई. So Jagjit immediately understood. He says, ठीक है, इसी pitch पे गाते हैं. सब गाने इसी पे गाते हैं. ये तेरा घर है मेरा घर भी, क्योंकि रेंज की थोड़ा सा एक मतलब सेमीटोन ऊपर है. And then today in the history of HMV, this is the best selling record. Eternal and classic, timeless. So as much as I want him to sing that song as well, but I'll come back to him on that again later. But
Karan, so you've also seen the music industry evolve probably over the 80s, 90s, and what's come to it now. If I talk about the pop music scenario in the 90s and what it is right now, do you see any difference or do you see anything done in a specific way which is making it evolve better? यार एवोल्यूशन इज ऑलवेज बेटर, मुझे ऐसा लगता है. टुडे यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ आर्टिस्ट जो अपने अपने गाने अपनी तरह से गाते हैं, एंड दे ऑल हैव देयर प्लेस अंडर द सन, एंड एवरीबॉडी शुड हैव देयर प्लेस अंडर द सन. व्हाई शुड क्रिएटिविटी द बेस्टियन ऑफ अ फ्यू पीपल कि चार लोग उसको इधर उधर लेकर बैठे हैं कि हम ही हैं. सबको मौका मिलना चाहिए, और अगर आपके पास सबके पास गाने का हुनर है तो वो उसका एक्सप्रेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए. एवोल्यूशन इस तरह से है कि अब जो है एक बहुत वाइड रेंज है बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, म्यूजिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, और उसमें हर तरह का एक्सप्रेशन जो है वो बैठ रहा है और कुछ लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो एवोल्यूशन चलता रहेगा. और जैसे कि कहा कि एवरी क्रिएटिव स्पेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर पहले हम गाने बनाते थे 6-6, 5-5 मिनट के गाने होते थे, अब तो आप 1.5 मिनट में बोलते हैं कि गाना बहुत लंबा है. हमारे अटेंशन स्पैन कम हो गए हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू पिक अप अ सॉन्ग्स एंड देन अंडरस्टैंड द ऑडियंसेस एंड देन सॉर्ट ऑफ do our own introspection when we write music. So the evolution is always good. Excellent. So, which is the song in the current times that you think is your favorite and you can sing for the audience? नहीं, वो तो फिर मैं गाते रहूँगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे गाने हैं. बट मुझे एक एल्बम जो बड़ी पसंद आई थी बॉलीवुड की, वो थी बर्फी. मुझे लगा कि उसमें पोइट्री, म्यूजिक और उसका जो बहुत अच्छा एक जो मिश्रण था वो बहुत बढ़िया था. बिकॉज लास्ट हमने इस तरह की पोइट्री सुनी थी, इजाज़त करके एक फिल्म आई थी कि मेरा कुछ सामान लौटा दो, या कतरा कतरा जिंदगी. तो उसमें वो जो वो जो आया था कि इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, आई मीन, और उस पर उतना गायकी भी बड़ी अच्छी थी और नए नए सिंगर्स की आवाज़ों को इस्तेमाल किया गया था. इनफैक्ट वो जो सिंगर थे जिन्होंने इतनी सी हंसी गाया था, वो मैंने पहले वो आवाज़ सुनी नहीं थी. वो जो सिंगर थे वो. और आपको बता दूं सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वो नागपुर से हैं. वो नागपुर से. अरे वाह, क्या बात डिसूजा है. नाम है उनका, मोहननगर में रहते हैं. तो गाना बनता है. अब निखिल का गाना यहाँ गाऊंगा. Let's start that. और श्रेया जी की टीम में हमेशा रहते हैं. मैंने सी नो, निखिल इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, बहुत अच्छा गाते हैं वो. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने उनको कहीं सुना भी था. इज अ वेरी वेरी फाइन आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया गाने वाले हैं. अब मुझे सोच के बताना पड़ेगा कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है, ताकि मुझे याद रहे वो. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां, दबे दबे पाँव से हाय हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी लगा के हम ताली चढ़ा के गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा भी होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ. Satya ma'am, when R.D. Burman came in the music scene, he brought some radically new things that around. Did you see that as a major change that was waiting to happen in Bollywood at that time? And what did that do to the music industry? You know, I won't say that R.D. was the only one. If you look at some of the songs that his father did, I mean, if you look at some of the fun music that his father did when he was an old man, it's not an old man's music at all. And finally, R.D. is his father's son. So he imbibed. And in fact, I have another very beautiful story to tell you about how when R.D. was doing Amar Prem, which has the most beautiful songs I have heard in many, many years, he was doing this Bada Natkhat Hai, Krishna Kanhaiya, and he had recorded it. And then he made SD listen to it. And SD said, Hobena. So he said, why Hobena? Tik to hai. Boli, nahi. What are you talking? You are talking of a woman who doesn't have a son. She is like Yashoda. She is feeling maternal love towards that child.
but it is also a bhajan. You have made it into a pure bhajan. That maternal love has to come. And he explained to him how to bring in that maternal love instinct into not only the singer but into the music. तो ये तो एक classical का हो गया, but even in the use of instruments, in the use of the songs in Sharmili, in the use of songs in Jewel Thief. You know what he did with Jewel Thief? Raat Akeli Hai. You know what he did? He did what we do as children. हम आपको कहानी बताते हैं, कविया, and you're saying, and then you go whoo into the ear. So that's what he did with that song. And he says that is the thing I had in my mind. कि मैं ऐसे crescendo में ले जाऊँगा, and then tweak, I would, make them जो भी चाहे कहिए, she goes. So he knew his tricks. And RD came at a time. What he did is he turned it to use more Western instruments. He was picturized on much younger people. The whole medium of cinema had changed. And Kishore Kumar, of course, was a maverick who would take a song anywhere and take it, throw it into the firmament. So I think that is what captured the imagination and stayed with this generation. From the singers of yesteryears, okay, if I take Kishore Kumar as an example, he brought in yodeling. It was very unique and very different. And at that time, experimenting was very rare, and he did that. So, do you remember any specific music or any kind of experimentation that really stayed with you and you used it in your music in Band of Boys? I think one of the biggest disruptors in the present modern era was A. Rahman with Roja. I mean, that was not the traditional sound of Hindi music. They had Nadine Shravan before that, Dholak, Tabla, we had Sajan, and a lot of musical hits बहुत popular हुए थे. But Rahman brought in the disruption. आप दिल है छोटा सा सुने या रोजा सुने तो आपको लगता है कि वो environment की जो ethos है उसको कितना खूबसूरती से कैप्चर किया. आप गाने को ज़रा दोबारा से सुनिए तो आपको लगता है कि आप उस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गए. तो he played around with sounds and he broke the mixing structure of a song. I mean, who would have thought of, because हम जो गाने पुराने सुनते थे तो किशोर दा की आवाज़ सामने होती थी और म्यूजिक पीछे में बहुत कोने में सुनाई देता था. The music was led by the singer. Here, it was a bass line and a musical structure that kind of changed the rhythm of the song. अभी suddenly आपकी तवज्जो जो अभी music became, the singer's voice became more like an instrument to communicate an ethos. तो वो एक बहुत कमाल का चीज़ था. हमारा जो म्यूजिक था जब हम we were like teenagers when the band started. तो उस टाइम हमारे का ये था कि we were restless, buoyant, jumping boys. तो when Leslie composed the music for it, तो जब उन्होंने पहली बार Leslie and Hari were a duo, colonial cousins, जो हमारा म्यूजिक करने वाले थे. It's a very interesting story because Hari is still a legend and हमारे लिए वो भगवान जैसे थे. And he's very strict. He was also our mentor and teacher. And he would say कि यार क्या कूदते रहते हैं सारा टाइम में. I mean, what kind of music should I write for them? तो Leslie said, calm down, they're boys. मतलब ऐसा कि तुम why so strict with them? He said, नहीं, purity, this, that. तो उसने बोला तो गाना मैं लिखूंगा. हरी ने बोला मैं लिखता हूँ अकेले गाना, तो you must take. तो उन्होंने गाना लिखा जिसका it's quite amusing to recall it. आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा मेरी नींद, but मेरी नींद में हमारा एक बहुत पॉपुलर गाना है. तो उन्होंने उसकी धुन कुछ इस तरह से बनाई थी. मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है. मेरी नींद एंड ढोलक तबला. एंड नाउ हरी जी सिटिंग देयर, हम बैठे हुए वहाँ पर एंड वी आर एंड ही इज लाइक लुकिंग फॉर रिएक्शंस कि भाई कैसा था बताओ जरा. एंड हरी जी को कौन बोलेगा कि यार ये तो भजन जैसा लग रहा है. तो ही वाज स्टक, यू कांट से एनीथिंग टू दैट मैन. एंड फाइनली हम निकले वहाँ से कि अब तो करें शुरुआत होने से पहले. एंड ऐसे हम नहीं गाना चाहते इस तरह के गाने. देन वी अप्रोच लेस्ली कि वी कैन नॉट से दिस टू लेस दैट सॉन्ग इज नॉट वर्क फॉर अस. We want songs that have the vibrance and the points of the band. And then he wrote Meri Neend, and it was not supposed to be part of the album, by the way. वो गाना सिर्फ शोज के लिए बनाया था कि हम डांस करते थे ना, हम सिंगिंग डांसिंग करते हैं साथ में. तो उसने बोला था कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम डांस भी कर सकें और गा भी सकें और वो विजुअल अच्छा लगना चाहिए. तो वो बना था. But when we started performing the song, it just had its own life. Absolutely. Then we had to include it in the album. That's the biggest hit. I'm not telling you the story to lead you onto that song. No, that song will sound better when there's music accompanying it, because that is more
one line. So all the young people जिन्होंने नहीं सुना है मेरी नींद, उनके लिए बता दूं तो आपने एक वर्जन सुना जो हरी भाई का वर्जन था, एक जो वर्जन जो फाइनली रिलीज हुआ वो ये वाला था. You have to clap. That's very important, or at least support, so that I feel कि it's a Music. Yeah, there's music coming from you guys. 100%. मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है. मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है. ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ. What a melody. Super. Lovely. That's wonderful. Bring that's really good memories. Satya ma'am, over to you. So we spoke about SD and then RD. There was a time when singers and actors got attached to each other. अमिताभ जी ये गाना यही गाएंगे, okay, इनका गाना वही गाएंगे. ये कब हुआ, कैसे हुआ, and how did the industry come out of this? I think it happened. I mean, one of the first people to do it was Raj Kapoor. 1949, when he did Barsat and he realized Mukesh was singing for him, he said, his voice sounds like mine. और फिर शम्मी कपूर के साथ हुआ कि somehow he felt Rafi knew when he was going to do his jhatkas and his lataks, and he would modulate his voice. So he said, this man understands me. तो ऐसे करके fitting होने लगा. And then because Rafi Sahab was so versatile and could change his voice according to the actor, then everybody followed. Dilip Kumar के लिए सबने गाया. मधुमती में मुकेश ने गाया है, रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया है, तलत मोहम्मद ने गाया है उनके लिए बहुत सारे गाने. So there is no one who has not sung for him except Mahendra Kapoor, thank God. But otherwise it happened that, which is why actually लता जी तो सबके लिए गाए. And sometimes as with S.D. Burman, he would use one voice, many voices for the same actor. So he kind of broke the mold. In Devdas, Mubarak Begum sings for, whom does he sing for? Paro. Mubarak Begum, Lata Mangeshkar, and Asha. He uses 7 voices for 10 songs. So it wasn't that they were absolutely fixed, but some actors had their favorites and they would insist. Now Manna Dey sang at one point for Raj Kapoor in Chori Chori. Because at that point, He was the only male singer. yes. Proved that conventional. No, it was because Mukesh had had a contract where he couldn't sing till his songs were released, you know. So they had to take Manna Dey. But otherwise, I think Raj Kapoor never broke that mold. But most of others, and our friend SD would say कि गाना लिखा है, देखेंगे किसको किस पे बैठेगा. Who will sing it? So he would have Kishore singing in Aradhana, for example. Rafi sings one song for him, and then for Rajesh Khanna and Kishore Kumar sings another song. So I don't think it was really that fixed as it seems. In our minds, many a times Salman is still linked to SP. Breaking the two is very difficult sometimes, because there was a time when all of Salman's songs were sung by SP Balasubramanian. So you must have also gone through the same phase while the music within you came up, right? You started off in probably 90s, right? 2000, okay. Band of Boys was 2000, is it? Okay, I feel younger, much younger. So during those years, initial years of 80s and 90s, okay, what were the key influences that you believe from Bollywood that you or the singers coming up at that time would pick up as cues? See, Bollywood का influence तो यही था कि जो गाने सुने थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, they were like the doyens of Indian music, they still are. हमारा influence I think ज़्यादा indie pop से था, because जब मैंने पहली बार लकी, in fact it's a very interesting episode, मैंने जब लकी भाई के साथ, लकी अली के साथ पहली बार शो किया, तो it was a fan moment for me. तो मैं जाकर बोला लकी भाई, and we were all behaving like little kids around him. And he says, हम लोग साथ में perform कर रहे हैं. Will you stop this fanboy moment? I said, once a fan, always a fan. तो हमारे लिए, हम तो आपके लिए fans ही हैं. और आप, you know, तो हमारे इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे, जैसे सिल्क रूट था, मतलब डूबा डूबा रहता हो गया, कोई हो यादों में, या के
पल यारो दोस्ती, तो हमें लगा कि यार ये इन्होंने एक दिस फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर कि अब जो 4-5 सिंगर्स सारे गाने गाते थे, अब कुछ नई आवाज़ें आई हैं और एक नया साउंड आया है। सो हमारा काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस, मेरा जो हमारे साथ बैंड वहाँ से था, मेरा खुद का पर्सनल इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज विद जगजीत सिंह, तो वो मैं हमेशा, एंड माई वॉइस टेक्सचर इज ऑल्सो बहुत सॉफ्ट, सो वो मेरे को बहुत सूट करता था कि मैं उस तरह की, तो आई हैव इनफैक्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एल्बम कमिंग आउट, सोलो एल्बम, इज कॉल्ड छोटी सी बात, एंड उसमें मैंने क्या किया, बेसिकली स्टोरी टेलिंग और म्यूज़िक को जोड़ के एक म्यूज़िकल बनाया है, लाइक द थिएटर ऑफ द माइंड। उसमें ना कोई नरेटर नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि एक लड़की आती है और उसकी जुल्फें ऐसे होती हैं कि बारिश होती है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर फिल्म है जिसमें ऑर्गेनिकली म्यूज़िक आता है, और म्यूज़िक ऐसा आता है जहाँ पर आप म्यूज़िक उसकी जर्नी को इंटरप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं, एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं कि यार देखो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा घर कैसा होगा, तो जो गाना आगे आता है वो ये आता है कि ऐसा होगा वैसा होगा अपना घर, जिक्र करें और फिक्र करें मैं और मेरे हमसफर, नरीसेस की दीवारों के रंग से लेकर कैसे होंगे फर्नीचर, छोटे छोटे झगड़े होंगे छोटी छोटी बातों पर, पहले लड़ाई को जब सुलझाने में तुमको आऊँगा मनाने, तो ये झगड़ा तो भूल ही जाओ, निकलेंगे सब शिकवे पुराने, फेंक के जब कुछ मारोगी मुझको तो बचते बचते बात कहूँगा, दीवारों का रखो जो भी, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा। Super. Are you going to sing that, please? It's going to come next month. Yeah. So I want to just keep that little surprise, but just also make you aware. Excellent. This What's the name of the? Choti Si Baat. And when is it coming out? Date? Sometime in January. January. Great. Okay. So great Valentine's. Wonderful. So you spoke about KK. If you had to give a tribute to him with one of his songs, Basically, he doesn't want me to talk. He says, "आप गाना गाते रहो, बोलो मत." so which one would you pick up? I think the eternal favorite would have to be Pal, because it also immortalizes him as one of the nicest human beings on the planet. Went too slow. There are few times, as a person from the fraternity, that one has actually shed tears. First one was when Jagjit Sahab died, and second was when KK died, because it is something that we were just not ready for. He was too young. So, and like I said, an immensely gifted person and a tremendous human being. So it is a serious loss. Again, the drill stays the same. You clap, I sing. You stop clapping. वो था ना शोले का dialogue. हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाएगी तो होगी खुश नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएगी ये पल। I want to add a story about, you were talking about telling a story through a song. I want to tell you how two different people told stories without words. One is when Hariji and Shiv Kumar Sharma wanted to tell HMV कि हमारे जो instruments हैं वो mainstream instrument बन सकते हैं, classical बन सकते हैं. HMV told them नहीं हो सकता है, पर आखिर में हाँ कहा उन्होंने. तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, कैसे करें. We will tell a story through our music. तो शिव जी कहते हैं कि हमने सोचा कि कश्मीर में हम ये कहानी लिखते हैं कि ये पहला है कि ये
शेपर्ड है जो बिल्कुल वहाँ अपने भेड़ों को चला रहा है. They are walking. He's waiting for his beloved. So we will play that in one rag. And then when the beloved comes, the rag will change. The music will change. The flute, the santoor will play together. Then the beloved, then there is somebody is watching. She feels कोई देख रहा है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, मैं शाम को मिलूँगी. So the third song is all the anxiety of their being caught, in this rendezvous. So she runs away and he is waiting for evening. So the fourth rag is when he is waiting, he goes to the temple praying कि उसे आने दो, कोई उसे रोके नहीं. And the final is the milan when they meet again. And that whole story called Call of the Valley, it is still there on YouTube. Listen to it. It's lovely, it's lovely. Also, I think एक और बड़ी कमाल की चीज़ है कि उस टाइम के गाने हमसे अक्सर पूछा जाता है कि why are they immortal? तो क्या हमारी हमसे एक धरोहर होती है, our own, we're the custodians of that legacy. We are advanced. I mean, one of the oldest civilizations in the world, and we have that very rich cultural heritage of ragas. And जितने भी गाने रागों में बनते हैं ना, उनका एक टाइमलेसनेस होता है. अभी कोई भी गाना जैसे आपने सुना होगा जो आपको लगता है कि आज भी रेलेवेंट है, ये गाया जा सकता है. अभी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राग लिखते हैं जैसे कि नीरे गा रे नीरे सा नीरे गा मा पा मा धा पा रे गा रे नीरे गा रे नीरे सा जब दीप जले आना जब शाम ढले आना. ये मन कल्याण हो गया. ये सा मा रे पा मा पा नी धा नी सा नी पा मा पा गा मा रे सा. बसंत बिहार हो गया. ऐसे हर गाने में जो है जब वो उसकी जो नींव और हमारी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो जो हमारे राग जो बने हुए हैं वो पहर के हिसाब से बने हुए हैं. जैसे उन्होंने कहा कि सुबह के पहर का जो मूड होता है एनवायरनमेंट का उसके हिसाब से एक रागधानी बांधी जाती है और उसको लेकर जब आप गाना बनाते हैं तो वो कितना ज़्यादा उसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एक इमोशन के साथ, सोल के साथ, और वो किस तरह से फिर ट्रैवल करता है. तो जितने पुराने गाने हैं उनकी लेगेसी इसीलिए है क्योंकि वो राग के ऊपर बने थे, वो राग का हमारे साथ एक सोल कनेक्ट है. एक और कहानी मैं बता दूँ आपकी इजाज़त से कि एस डी बर्मन का, आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट एस डी बर्मन, किताब है इसलिए आई एम ट्राइंग टू सेल द बुक. पर ये है कि जब गाइड में आपने काफ़ी लोगों ने गाइड देखा होगा, देयर इज़ वन सीन विच देयर इज़ अ डांस विदाउट म्यूजिक. तो दिस वाज द चैलेंज टू एस डी बर्मन कि यहाँ एक आपको कहानी बताना है ऑफ दिस गर्ल रोजी, and you have to tell her story of her life till the present without words. So he didn't know what to do. S.D. Burman never used more than 5 or 4 instruments. Usme, one exception, and the other one is in Jewel Thief, he used 11 instruments. और उन्होंने 7 different percussion instruments use किया because he started with her joy. Someone who is restricted by a husband कि तुम डांस नहीं कर सकती हो, डांस तो नीचे वाली औरतें करते हैं, तुम मेरी औरत हो, तुम्हारी मेरी वाइफ हो, उसको अगर फ्रीडम मिल गया है, so that first joy, that surprise, that was had to be shown. Then she remembers her, she starts dancing in abandon, then she remembers कि मैं तो फंसी हुई हूँ, I have to go back to this man. So anger, frustration, and towards the end the rebellion. The whole thing he shows in his thing. And I have a quote from Maheda ji in the book where she says कि I did not know what I was doing, but once I started dancing, I realized I was telling a story. And that emotion. We've almost come to the end of this particular session, and while I will request Karan to give us a wonderful song towards the end, I have one last question for you, Ratna. I'll bring to Karan as well. Bollywood music is considered to be a unification factor of our country. Rather, entertainment industry's music is considered to be the unification factor of our country, and it has been so for many, many years. Do you think that that bond is still strong, or do you think the bond is weakening? I was in England till last week, and my brother-in-law, I'm from the south, okay, I'm a Tamilian. My brother-in-law has lived in Madras and in England. He doesn't speak a word of Hindi, but he listens to Hindi songs on the car. So I was very happy when we were driving. एक के बाद एक गाने आ रहे हैं, and he would sing along. I said, do you know what you're singing? He says, पता नहीं.
I don't know. One, 2 or 3 words he knows. Pata nahi he knows because everybody has to tell people हमको हिंदी नहीं आती है, so he says pata nahi. So he says pata nahi, but he sings along. And if you go to Germany, if you go to, of course, Russia, and if you listen to ambassadors singing old Hindi songs and choirs everywhere singing old Hindi songs, you know that of course it's true. It not only welds the nation together, it welds the world together. I think music is timeless, and you know, it's because music is produced by. हमें इससे पहले सेशन में AI की बात हो रही थी, तो मतलब जब तक सोल जिंदा है, AI will not take over. तो म्यूजिक का एक सोल कनेक्ट होता है, एंड वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हो या किसी भी इंडस्ट्री के थ्रू हो. आज हम साउथ के गाने भी गाते हैं, हम तो स्टेज पे गाते हैं इनफैक्ट. एंड इनफैक्ट माय नेक्स्ट बुक इज कॉल्ड it's called Rockstar in Reverse, and it's a very self-explanatory. When is it coming out? It's January. January. Yeah. The book and the album releasing together. Together. That's Yes. I wanted to time it together because eventually मेरी पहचान as a musician first है, बाकी सारी चीजें हैं just add-ons. तो I wanted to कि मैं कहानी जो वो है और दोनों का स्क्यू बड़ा अलग है. Rockstar in Reverse is a very quirky love story about modern day love. It talks about a down and out musician जो and it's a love story between a boy and a girl, and how both of them manipulate each other wanting to become famous, मैं भी famous, and using social media, everything. And in the process of trying to manipulate each other, they find music. Then they find sacrifice, and then they find love. And they're all integrated with each other, all these emotions. So that's what Rockstar in Reverse is all about. That's coming in January. And I wanted to talk about the music industry, and it's very self-deprecating. मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान देने का क्या फायदा है, because ज्ञान खुद का तो संभलता नहीं है, लोगों में बांटते रहते हैं. So I wanted to. The book is very tongue-in-cheek. It's written with a you know, the sort of pinch of salt, and it's hilarious because I've not spared anyone from the industry, including ourselves. So it's out sometime in January. Excellent. Watch out for that one. So, since you've also agreed that the music is a unification factor, can you sing us a couple of songs, maybe short medley, which you believe are the strongest representation of the entertainment industry today? Pick up a few songs like that. On the fly, it will be kind of difficult, bro, because. Or maybe, okay, sing a few favorites of yours as. Oh, that's a. Okay, I'll try and sing that. Are you guys familiar with Ek Pyar Ka Nagma? Everyone at the back? Okay, wonderful. You can all sing. Oh, wonderful. I think it'll be great if you all sing. Yes, उससे lovely. पहले अगर आप में से किसी को कुछ सवाल है, because the last session, yes, so you must have that. Get started. Yeah. Hi. That's sweet. So I'm a 90s kid and this is a huge fangirl moment for me. So I feel old. And firstly, I'd like to ask that in the late 90s and early 2000s, indie pop or the band culture seemed like the next big thing to happen. But it never really evolved in that direction. And now when we look at the Western music contemporarily, so the pop stars are, economically doing well. And you spoke about Arijit, that he's, even though he's the voice of the industry at present, his personal albums don't really get that much of success economy-wise. Yeah. So why is that happened? That's got to do with the ethos of both the industries. Because Hollywood there's no music in part of their narratives, whereas it's an integral part of our storytelling. So shouldn't that have helped rather? Because most of our movies are singing and dancing is an integral part of that. But so the struggle is, I as an individual artist and resonate with Jagdeep Saab's frequency. I want to write music like Choti Si Baat, which is more poetry, may not fit the film's narrative. It may not be the requirement of the film. Owing to a rich cultural heritage, shouldn't we have been more, right? This scene should have evolved more in our culture rather. No, so if you understand, there's a little assimilation of sounds that have happened. The indie pop music that is now Bollywood music in terms of sounds. But I'm writing 2 films right now, and know for a fact that very film ki narrative mein, the song cannot be a disruptor in terms of it cannot disrupt the narrative. तो मेरी जो requirement होगी उसके हिसाब से म्यूजिक बनाना पड़ेगा. अब
मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, इट पेन्स मी टू से कि यार म्यूजिक आप अपने हिसाब से मत बनाओ, अपने एक्सप्रेशन को सामने फॉरवर्ड मत करो, मेरी फिल्म को एड एंड अबेट करने के लिए हो ताकि मेरा नैरेटिव ना टूटे। तो वो एक हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इट्स आयरॉनिकल इन दैट वे। बट देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी भी है कि हमें ना हर इंसान पूछता रहता है कि आपकी अपनी एल्बम कब आ रही है। जब जिस दिन हम एल्बम रिलीज करते हैं, व्हाट डू दैट टेल यू? आई रिलीज अ सॉन्ग एंड दे आर माय फर्स्ट व्हेन आर यू रिलीजिंग योर नेक्स्ट एल्बम? आई सेड अभी तो रिलीज किए, चेक इट आउट। व्हाट आर वी चेकिंग आउट? वी चेकिंग आउट पठान, जवान, बिकॉज उसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है, वो आप तक पहुंचती है। जिस दिन आप लोग पेटर्नाइज करना शुरू कर देंगे ना, जैसे आप करते भी हैं, जैसे आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट ब्रेकआउट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाज दिस प्रतीक कुमार। He grew organically through you guys. अब उसको बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अंदर एसिमुलेट कर लेती है, उसकी साउंड यहाँ तक हुआ, उसके 2 गाने यूज भी हुए हैं। तो अभी रिवर्स फिनोमेना बड़ा चल रहा है कि कोई गाना पॉपुलर हो जाता है तो हिंदी फिल्म को लगता है, इंडस्ट्री को लगता है कि यार इस गाने को हम अपने यहाँ से यूज कर लेते हैं। सो इट बेनिफिट्स द आर्टिस्ट एज वेल एज द इंडस्ट्री। रैप आर्टिस्ट नो, बाकी गाने में भी हो रहे हैं, मेलोडिक गाने आपने कंज्यूम करेंगे तो मेलोडिक गाने पॉपुलर हो जाएंगे, तो लॉट ऑफ काफी दारोमदार हमारी ऑडियंस पर भी जाता है। In fact, it's really good time for all musicians because there's so many platforms that have come up in commercialization. So the parallel track has picked up really well, and we're bound to see far more successes coming out from that part of the industry soon enough. Absolutely. Okay. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है एक पल का, आकर ढल जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। So add one more word to it. You are a performer. And I cannot thank all 3 of you enough actually. You gave us a wonderful musical time actually. But I need to pull that curtain down because time is a constraint only for me. You have a passion. So Before you guys, anyone who's taken recording of what we were doing just now, you know, this recording is a wonderful way of creating beautiful lifelong memories. अब क्या है कि हमारा डिजिटल फुटप्रिंट इतना कमाल का हो गया है कि हमारी मेमोरी के लिए हमें वो किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती, एल्बम नहीं ढूंढनी पड़ती, वी कैन जस्ट रिविजिट द टाइम पीरियड एंड सोशल मीडिया आल्सो कीप्स इन्फॉर्मिंग यू कि इस साल में आपने ये किया था। फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंस्टाग्राम करण ओबरॉय ऑफिशियल, प्लीज टैग मी। thank you audience. Thank you once again and special thanks to Lokman Sakti Manch. Right. Thank you.